Bueno, y entonces los invito a todos para que vengan a Fiesta. अब मुझे बस fiesta समझ आया. I think fiesta is party. Fiesta. Okay, party it Que is. vengan a la fiesta con los cubanos. Okay. Sí, señorita. Okay. Cogiendo el filé, le gusta la verde, le gusta entonar, aquí estamos chile, Party, 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 nos ponemos farria, nos encanta el perreo, Hablan mucho, mucho, pero ¿dónde están los haters, baby, que no los veo? Los dos en la pista, esto se puso feo. Duro, 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 pam, pam. Le gustan los malos, los underground. Duro, 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 pam, pam. Su no queda el que sea en primer round. Duro, 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 pam, pam. Le gustan los malos, los underground. Duro, 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 pam, pam. Siempre estamos a la altura, pero perreamos ambientado. Vamos a pecar con perreo, baby. Te veo con un flow criminal. Aquí en el party se siente como el ambiente nos lleva a otro lugar. Con perreo sin dona, todos estamos head, también en la zona. Solo cuando pone freaky, 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 freaky tona. Canta como loca porque se emociona. तो ये अपना जो पिछला अपार्टमेंट है वो तो मैं एक्सटेंड नहीं करवा पाया क्योंकि वो मैं 2 दिन के लिए करवाया था. वहाँ पे किसी और गेस्ट ने आया था तो मैं सोचा जो अगला करवाया जाए वो मैं फिर करवाता हूँ ओल्ड हवाना के अंदर ही, क्योंकि ओल्ड हवाना कल देखा है बहुत ही खूबसूरत है. यहाँ से थोड़ी सी जो है ना वही बात है, कलर एडजस्ट करने की वेट करनी पड़ती है ना क्या बनेगी. बाकी B&B ऑसम एकदम बढ़िया. और यहाँ पे जो है ना इन्होंने सारी ये बॉटल्स लगा रखी हैं और इनके ऊपर सबके ऊपर रेट लिखे हुए हैं जैसे होटल में होती है ना मिनी बार के अंदर. ये जैसे $9.99 की है वैसे ओबियसली सस्ती होगी, बट यहाँ पे क्योंकि ये एज अ बिजनेस इसको रन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा है. बीच में छोटी सी किचन भी है. यहाँ पे अंदर आके बहुत ही बढ़िया वाला बेडरूम है, नाइस बिग बेड और यहाँ पे मिनी बार. तो हर जगह उन्होंने दारू शारू सामान सजा रखा ताकि लोग लें और उनकी कमाई हो. बट मेरे से तो शायद निराशा ही हाथ लगे, मैं दारू तो पीता नहीं. Esta es una prueba que apenas estoy empezando. No seguro que todos esos shots se pusieron a fluir, Baila cerquita pa'lante y pa' atrás si quiere encima de mí, कल की वीडियो के बाद ये बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों से पूछा था कि क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप एक सोशलिस्ट कंट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों से. तो क्लाउडिया जो मेरे टूर गाइड हैं वो यहाँ पे पहुँच गई हैं, तो मैंने उनको आज घर पे इनवाइट कर लिया ताकि आराम से यहाँ पे उनके और उनकी फ्रेंड अनैत के साथ बैठ के बातचीत हो जाए. थोड़ा सा हम जो है अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लें. और यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुनकर काफ़ी हैरानी होगी क्योंकि सिस्टम बड़ा डिफरेंट है. जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट जो है मोबाइल डेटा सिर्फ 1 साल पहले आया है. Mis canciones como si fuera oraciones en la misa. Tiene carácter de guerrera como Tony Caero, pero conmigo ya está bien sumisa. No es mala mía, si anda sudando. Tú pasas todo el día conmigo aquí gozando. In Cuba, no violence, no drug. In Cuba, everything is okay. At one time, 9 o'clock, the afternoon you work. No problem. Everything Cuban people are happy for the tourists. Absolutely. No problem. You work. No problem. Duro, 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 pam, pam. Le gustan los malos, los underground, दोनों आने वाली हैं, बस चलते हैं. No queda el que sea en primer round. Duro, 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 pam, pam. Le gustan los malos, los underground. यहाँ पर थोड़ा शोर बहुत ज़्यादा है मगर गाड़ी मेरे को दिखी तो मैं सोचा इनसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लूँ. गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों हैं? So what is the reason that cars are so scarce and so expensive? First we have old cars that are inherited, and now modern cars, because we don't make our own cars, we don't have a cars industry, then exporting them and then selling them, it makes everything expensive because of the embargo. We cannot get them from a close country. So you cannot get them from USA, you cannot get them from Canada because of the American embargo. Probably to China and then bringing it to Cuba is really expensive. So the shipping and import costs you a lot. And then to get modern cars, you need to wait until some company of the government or embassy or diplomatic buys them on their cost, use them, and then when they don't want them anymore, they sell it, let's say in a cheaper
price. And most of the industry here, as of now, is government. Offices, work, defense, all the sectors. Exactly. Okay. Even transport, Even transport, telephone companies. telephone companies, Okay, so everything is. everything. Okay, all right. Other than the, so what all are? I would want to ask you, if everything is government, then what is private? And we will ask that probably inside the apartment because it's getting a little noisy here. Okay, Okay. let's go then. But before going, I would like to take some pictures and videos for the Instagram because the city is very colorful. Okay. Yo, baby, te veo con un flow criminal. Ja, aquí en el party se siente como el ambiente nos lleva a otro lugar. Yeah, con perreo sin dona, todas estamos heavy, también en la zona. अब जी यहाँ पे जगह जगह पे ना ये ऐसी पुरानी पुरानी गाड़ियाँ आ जाती हैं तो मन करता है बंदा इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ खींच ले मगर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इंटरनेट बहुत नया है सो क्लाउडिया इफ आई माइट वांट टू आस्क यू when did you first get Wi-Fi internet in your country and when was the maybe we just want to comment on this right yeah okay भाई गाड़ियों के नीचे ना आ जाए ना so when was the first you had Wi-Fi Well, we started having Wi-Fi 2 years ago. 2 years ago. 2 years. Wi-Fi at home or No, it was In the park, near Okay. the hotels, and Okay, so in the specific public places. areas. public areas, yes. So public areas you had Wi-Fi 2 years back, and how about Wi-Fi on your phones? A year. A year ago, yes. This one here. And you guys use Instagram and everything now or no? We are new. We are new to Instagram. Okay. But I don't We are have. discovered. Okay. She doesn't have Instagram Okay. yet. All right. So basically 1 year till you have 4G. Yes. Okay. Habla mucho, mucho, pero ¿dónde están los haters, baby? Que no los veo. Los dos en la pista, esto se puso feo. Cha. Duro, 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 pam, pam. La jeva le gusta lo malo, lo underground. Yeah. Duro, 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 pam, pam. Sube lo que es al que siempre me around. Duro, 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 pam, pam. La jeva le gusta lo malo, lo underground. Yeah. Duro, 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 pam, pam. तीसरे माले पे Siempre estamos a la altura, pero perreamos ambientado. Vamos a pecar con perreo, baby, te veo con un flow criminal. Ja, aquí en el party se siente como el ambiente nos lleva a otro lugar. Yeah, con perreo sin dona, todo So in terms of relationships, commitments and lasting relationships, what is basically the scenario for love marriages or arranged marriages? First of all, if you have that. Well, I think arranged marriage is everywhere, but it's not pretty common here. Most of the time, my generation, I think, is not pretty into getting marriage. Instead, we have long-term relationships, but without. We even live together, but we don't get married. Okay. But other generations, used to get married a lot, and Get getting divorced. divorced was Normal. like the same. a Yeah, lot. really? Okay. Yes, but it's not a complicated issue. Okay, Just but if there are babies in between, then you have to Men have to pay some amount per month to maintain the kids. But how about, because you know, you heard the famous cases that the owner of Amazon was paying so many billions to his wife and everything. So do you have something like that also here, like or no? no. No, really? No. That's the We just social. get divorced, and that's Okay. it. And that's it. If Okay. you have like a house that you bought together, Yeah. then it's separated half, and that's it. Okay. So like let's say the husband. So basically the property that was bought together is separated. Exactly. And so this is like splitting. This is like a breakup. This is not like a marriage Exactly. ending. Yeah. Okay. So this is like, you know. Okay. You were in a relationship. You got married. Now you're not together. You break up. That's If you it. don't have a child, there's no problem. Oh. You Okay. just sign the paper, no more. That's it. Divorce, that's it. Okay. Easy. And divorce is popular. Common. Yes. I mean. Common, yeah. Okay. aquí en el party se siente como el ambiente nos lleva a otro lugar. Yeah, con perreo sin dona.
persona. Todos estamos head, también en la zona. Solo cuando ponen freaky, 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 freaky down. अब जी बात थोड़ा अंधेरा हो रहा था, हमने सोचा थोड़ा अंदर आके बात कर लें। सो एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, कल रात को ये मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना यहाँ पे एक साथ में एक लाउंज बार है, वहाँ पे ले गई थी। तो मैंने सोचा यार लाउंज बार तो जो है ना ये तो सरकारी नहीं हो सकता, अगर सब कुछ यहाँ पे सरकारी है, दिस मस्ट बी प्राइवेट। तो मैंने पूछा, और वो लाउंज बार था कैसे, किसी के घर के अंदर, जैसे हमारी कोठियाँ होती हैं ना, तो आप ये लगा लो किसी सेक्टर की कोठी के बीच में किसी का बड़ा सा घर है, उसने अपने छत के ऊपर इतना ज़बरदस्त सा लाउंज बार बना रखा है। Le gusta lo malo, lo underground, yeah. Duro, 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 pam, pam. Siempre estamos a la altura, pero perreamos bien Y down. baila todos los reggaetones y se saben mis canciones como si fueran oraciones en la misa. वो अलग बात है, वहाँ पे मैं पूरी शूटिंग नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे रूल था कि यू कैन ओनली शूट टेबल ऑन योर ओन, यू पीपल ऑन योर ओन टेबल। तो बट फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई वो क्या सीन है ये प्राइवेटाइजेशन का, या मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे ओन कर सकते हैं कि नहीं, और घरों में कैसे बार खुले हुए हैं। तो पूछते फिर इनसे क्या कह रही हैं। Okay, so private businesses started 5-7 years around. Okay. Yeah, and it started with specific businesses like restaurants, small bars, sports centers. Yeah, that's not a lot of- hairdresser or stylist. Okay, and but I'm curious. Yes. The hairdresser salons, they also used to be government run before that. We have both of them. Yeah. Now we have private and government. But before they were private, they were also government run. So Yes. government would run salons. Yes. Oh, Really okay. cheap salons. Okay, really cheap. So the advantage is, even though if it is government run, that does not mean that it is bad quality or expensive. It's really cheap. It's really cheap and quality could be really good. Okay, okay. That's interesting. That's something I've heard for the first time. Government running salons. Okay. Yes. But there are no places to make those businesses, so people use their own houses. Le gusta lo malo, lo underground, yeah. Duro, 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 pam, pam. कुछ इनका कहना ये है कि यहाँ पे बेसिकली अभी ना सब कुछ ही सरकार ओन करती थी, तो बड़ी रिसेंटली जो है प्राइवेट बिजनेसेस ने ओनरशिप लेनी शुरू करी है, राइट्स और लाइसेंस मिले हैं। तो यहाँ पे कोई आईटी पार्क्स नहीं बने हुए, यहाँ पे कोई कमर्शियल जोन नहीं है, यहाँ पे कोई एससीओ नहीं बने हुए, प्लाजा की मार्केट्स नहीं बनी हुई, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेक्टरों की मार्केट होती है, 17 सेक्टर चंडीगढ़ टाइप। तो वैसा कुछ है ही नहीं। तो लोगों ने अगर प्राइवेट बिजनेस शुरू करने हैं तो उनको अपने घर में ही करने हैं, तो वहाँ से फिर वो स्पेशल परमिशन लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि डिस्को वाले को लेनी है, नाइट लाइफ वाले को, तो पड़ोसियों को थोड़ी सेवा कर दी, उनको कहा कि थोड़ा शोर होगा यार संभाल लेना, ऐसे करके। तो लोग अब ये कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं धीरे धीरे जो है ना मेन स्ट्रीम सिस्टम के अंदर आने के लिए। बट अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, अपनी डिसएडवांटेजेस हैं। मगर अब आपने देख लिया, टॉप नॉच मेडिकल फ्री है, टॉप नॉच एजुकेशन फ्री है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बैलेंस बन के चलता है ओवरऑल। The government gets benefit because they have to pay a tax. ओके, Yeah, for using that space Okay. as a so basically the residential place is converted into commercial space, and then they have to pay tax on that. Okay, so Exactly. the government earns the tax. What's the tax? It depends on your business, but let's say you pay social security and amount and a percent of the amount of the income. Earn. Okay, it's like royalty that you pay to the government. Okay, and do you pay tax? I don't. I mean, as a normal citizen, do you pay income tax? No. No, there's no tax on your income. No. Okay, even if it is a private income, you don't have to pay any tax. If we work in a private business, Yeah. then we have to pay a tax as a worker Okay. in that business, Okay. depending on our incomes and Okay, That- just like India. like anyone. Yeah. Okay, any other country. Okay. But as long as you are working for the government, they pay from your salary. Okay. They just take the small amount of social security. Okay. So when you're paid, you don't have to pay any taxes. So that's basically like what the insurance and all those Insurance, things, exactly. education and everything is covered in that. Okay, all right. Habla mucho, mucho.
mucho, pero ¿dónde está? और अभी हमारी बातचीत और डिटेल्स में क्यूबन कल्चर को समझने की कोशिश चली रही थी कि क्लाउडिया के कुछ और फ्रेंड्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। Duro, duro, pam, pam. Ejo, le gusta lo malo, lo underground. Dice, duro, 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 pam, pam. Suri no queda el que siempre me round. अभी हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी सी कल की प्लानिंग कर रहे हैं पार्टी वगैरह की, एंड फ्रेंड्स क्लाउडिया के ज्वाइन कर रहे हैं हमें साथ में। व्हाट्स योर गुड नेम? Dylan? Yeah. Oh, and you are also born and raised in Cuba? Yeah. Yeah. Okay, and you are? Julian. Born and raised in Cuba again? Yes. Do you speak a little English or mostly Spanish? So. Okay. So you think you will get better with English if we get you some drink? I am drinking. Okay, all right, okay. So, wine, beer, wine? Okay, let's get some wine. White wine? Okay. Pa'lante y pa' atrás, si quieres encima de mí. Yeah. Duro, 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 pam, pam. A Ejo le gusta lo malo, lo underground. Duro, 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 pam, pam. Oh, awesome. I really like your tattoos, by the way. Duro, duro, pam, pam. A Ejo le gusta lo malo, lo underground. Siempre estamos a la altura, pero perreamos bien Y down. baila todos los reggaetones y se saben mis canciones como si fueran oraciones en la misa. Tiene carácter de guerrera como Tony Caero, pero conmigo ya está bien sumisa. No es mala mía. Si andas So Julia, what do you do for work? Are you working, studying? I am studying a civil engineer Civil engineer? Yes. Wow. Okay. and I am a work for model, Instagram model. Instagram modeling. Same. Oh, that's nice. You have a very strong Spanish accent. But do you party otherwise, or like youngsters? I love a party. Every day I go to the party. Every day? Okay. That's nice. pasa todo el día conmigo aquí gozando y tra. Y no es pa' tanto. Esto es una prueba que apenas estoy empezando. Me aseguro que todos esos shots se pusieron a fluir. Yeah. Baila cerquita, pa'lante y pa' atrás, si quieres encima de mí. Yeah. So, how about expenses, living expenses, electricity bill, water bill, house tax? That's something very cheap, and it's really good in Cuba. For example, we have like 10 Cuban pesos for the Gas water and or water. gas. That's like regular. Also telephone. Yeah. That we have telephone at home. That's like super cheap. And then Electricity. electricity is also pretty cheap. And we don't have to pay house taxes. If it's Oh. your house, unless you are living in a rent, Yeah. you don't have to pay anything. Okay, and if you say cheap electricity, like let's say this apartment is like a one-bedroom apartment, air conditioning is on all the time, we're using hot water. How much would be electricity for a month? If you have the air condition on, Yeah. probably all all day Yeah. will be a little expensive. Let's say $15. $15. Yeah, $15. $15 a month? $50 per $50 month. a month. Okay. Yeah, but that would be electricity. But gas wouldn't be like Five. Yeah, five pesos. 5 Cuban pesos. Okay. Or water would be like Aquí en el party se siente como el ambiente nos lleva a otro lugar. Con perreo sin dona, todos estamos heavy, también en la zona. तो जी फाइनली गपशप मार के जो है ना हमने थोड़ा सा कोई प्लान बनाया पार्टी वगैरह का। मैडम ऑर्गेनाइज कर रही है, शी इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। लेट्स सी व्हाट वी आर एबल टू फिगर आउट इन द नेक्स्ट few days, showcasing the contrast of the Cuban nightlife. As in, a lot of people believe that in a country where there is socialism, probably it's very restrictive, or there are a lot of rules and regulations to follow, blah blah blah. But we'll do you have guys? some surprises. Yeah, you have some surprises. So we have some surprises to show. दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की जो है नाइट लाइफ कैसे मेन स्ट्रीम है और कैसे यहाँ पे कल्चर जो है थोड़ा सा सोशलिज्म के अम्ब्रेला के अंडर भी ओपन है। बट अगर ये वाली वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।